भारत के जवाब देने के अधिकार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण का खंडन करते हुए पूर्व भारतीय राष्ट्रीय केपी फैबियन कहते हैं, बात कुछ ऐसी है, पाकिस्तान के लिए हमारे आतंकवादी उनके कश्मीरी भाई हैं जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए यह शब्दों के इस्तेमाल का सवाल है, लेकिन यहाँ भी बैठकर बात करने से सहमति के कुछ क्षेत्र निकल सकते हैं। भारत पाकिस्तान के मतभेदों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाना होगा। ट्रंप या किसी और को इसमें शामिल करने की कोई मदद नहीं मिलेगी। Diplomat said Sharif glorified terrorism, accused Pakistan of lies and duplicity. Well, it's like this. Our terrorists are for Pakistan, their quote Kashmiri brethren fighting for their liberation, unquote. So it's a question of, how one uses words. But here again, sit down and talk, and it is possible to find some area of agreement. India said bilaterally no third party. Well, that is going back to Shimla agreement, and that is the best way. India-Pakistan differences have to be sorted out bilaterally. By bringing in Trump or anybody else, it doesn't help. Sir, if we talk about